Well, all right. Few questions were given to you for your own work yesterday. 15, 16 आपने किया है क्या? सही में किया है क्या? वही में किया है क्या? सही में वही में किया है क्या? तो 15 सम के लिए क्विकली अभी मेरे तरफ देखो. Certain sum of money doubled in 6 years and 7 months. What does it mean? P is P, A is 2P, 2P equal to P, 1 plus R we don't know, and 6 years and 7 months will be 6.58333. मिला है क्या? PP cut. So 2 raised to 1 upon 6.58333. Now that is equal to 1 plus R over 100. Now tell me, how will you do this calculation? 2. It will be root 12 times. That minus 1. Then divide by 6.58333. Then add 1 and then into equal to 12 times. So tell me, how much is this number? What is this number? It's 1.11103. That minus 1 will be R over 100. So R will come out to be 11.1%. Aaya hai? Very good. Is it difficult? Not at all. So 16 sum के तरफ देखो. Money doubled in 8 years. Now what do you mean by money doubled in 8 years? P is P. A is 2P. So 2P equal to P. 1 plus R over 100. That raised to 8. PP cut. So 8 will come on to this side. 2 raised to 1 upon 8 is 1 plus R over 100. Now how will you find 2 raised to 1 upon 8? 2 root 12 times minus 1 divided by 8 plus 1 into equal to 12 times. Now what is that number? 1.09005. Now that minus 1 is R over 100. So 9.05 is the value of R. बट वहाँ क्वेश्चन एंड नहीं होता है, वहाँ क्वेश्चन का सिर्फ आधा पार्ट खत्म होता है. फर्दर दे से what is the rate of well, then they say further, what in how many more years will it triple itself if the rate of interest is increased by 1.5. तो फिर क्या होगा? They want the money to triple. So P is P, A is 3P, and जो पहले R मिला था 9.05 वो 1.5 से बढ़ गया, तो it will be 9.55% per annum. And as such अभी वो क्या होता है? 10 point, of course 10 point. Then 3P is equal to P. 1 plus is 10.55 over 100. That raised to n. PP cut. So 3 minus, so 3 is equal to 1 point, bolo, 1055, that raised to n. Therefore log of 3 over log of 1.1055 is the value of n. अब ये बोलो कितना? log 3 कैसे निकालेंगे? 3 root 15 times minus 1 divided by 0.00007027178. तो मेरे को बोलो n कितना आया?
This was supposed to have been done as a homework. कितना आया? Roughly 11 years. Okay. Now what happens is that money doubled. Listen, money doubled. P का 2P हो गया in 8 years. और ये 3P बन गया शुरू से लेकर 11 years में. And they are asking you in how many more years. तो 11 years शुरू से है, लेकिन डबल होने के बाद फिर कितना समय रहा? 3 years. And therefore, if the question is in how many more years, then your answer has to be in 3 more years. Because doubling के लिए पहले तुमको 8 years लगे थे. समझा? Is that clear? Could you do that? Fantastic. Now, this is good question. Difference between compound interest and some simple interest at 7% per annum in 5 years is rupees 100. तो क्या दिया है? Difference between compound interest and simple interest. So compound interest minus simple interest is rupees 100. But what is the formula for the compound interest? Is P into 1 plus R over 100 that raised to N that minus 1. This is formula for the compound interest. Minus simple interest is P into N into R over 100 and ये difference दिया है 100 का. तो अभी मैंने क्या किया कि ये दोनों में से P को कॉमन निकाला. ये सुनो, तो मैंने अगर P को कॉमन निकाला तो फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 7%, करेक्ट ना? तो 1 प्लस 7 over 100, N दिया है 5. नाउ दैट माइनस 7 into 5 over 100, मैंने N और R की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है and that is equal to 100. So P into bracket, this is 1.07 raised to 5 minus 0.35, this is equal to 100. Now how do I find 1.07 raised to 5? It is 1.07 into equal to till counter becomes 6. Therefore it is P into bracket. Now what is this value? Hmm? 1.40255 minus 0.35 and this is equal to 100. अभी ये मैंने इसको इधर 100 को डिवाइड किया तो मेरे को P मिलेगा. करेक्ट ना? So tell me how much is the value of P? कितना आता है P की वैल्यू? Best advantage of you trying as a homework is that here you don't have to spend more time for doing these calculations. 95? 95 आया? 95. Check. I just wait. यहाँ और एक -1 होगा ना? 95 कैसे होगा? Check. ये basically और एक -1 है ना इधर. तो it will be 1.35. Check करो. P और ये कम से कम 100 के ऊपर ही आना चाहिए ना. डिफरेंस इटसेल्फ इज 100. 1903. तो अप्रोक्सीमेटली रुपीज 1903 आता है क्या वो देखो. ये 1 मिसिंग है ना, ये और एक 1 था ना बीच में. In that case look at sum number what? 18. 18th के तरफ देखो. Compound interest on certain sum is 1/3 of the sum. क्या मतलब है? Compound interest is 1/3 of the sum. Tell me what should I write? Compound interest is nothing but P into bracket 1 plus
r over 100 that raised to n that minus 1 and this is 1/3 of sum, मतलब 1/3 of p. So this p is going to be cut. All right, p is going to be cancelled. तो फिर अभी क्या दिया है उन्होंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है ना, 5 years का पीरियड दिया है और इवन देयर पर ये p अगर कट हो गया है तो 1 प्लस r वी डोंट नो दैट रेज टू 5 दैट माइनस 1 इज 1/3 मतलब 0.3333 and as such 1 plus r over 100 that raised to 5 ये 1 इधर ऐड करेंगे तो 1.3333 आएगा. एंड नाउ व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, जब 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 आपको r की वैल्यू निकालना है तब तक वो 5 उधर ट्रांसफर करो. तो 1 प्लस r over 100 that is equal to 1.33333 and that raised to 1 upon 5. Now how will you do this calculation? Is 1.33333 then root 12 times that minus 1 that divide by 5 add 1 and into equal to 12 times. So tell me 1 plus therefore r over 100 comes out to be equal to what? 1.0592 and as such r over 100 is equal to 1.0592 that minus 1. So r will multiply this 100 5.92% per annum. Okay. In that case, look at the 19th sum. What is the present value of rupee 1 to be received after 6 years? क्या wording है? 1 rupee receivable at the end of 6 years. मतलब what is 1? A. A is not principal, it's A. Because that 1 rupee is to be received after 6 years. 6 years के बाद तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को 1 रुपए का चॉकलेट देना है तो 1 रुपए आज से सेव करना पड़ेगा. तो आज का सेविंग कितना होना चाहिए, so that after 6 years you will get 1 rupee. समझा ना? And rate of interest is given to be what? 7.2. So tell me how should I treat it? ये 1 rupee क्या है? A. बताओ 1 rupee अगर A है तो 1 is equal to P. 1 plus rate of interest कितना है? 7.2 over 100 and that raised to 6. And as such 1 is equal to P. 1.072 that raised to 6. Now 1.072 into equal to till counter becomes 7. करो तो कितना था? P into 1.5763. So 1 divided by 1.51763 is the value of P. Now what is this P? 0.658. अभी ये 8 है ना, तो हम इसका 0.66 कर सकते हैं रुपीस. बट रुपीस 0.66 का मतलब होता है 66 पैसे. समझा ना? तो यू इन्वेस्ट 66 पैसे टुडे and after 6 years you will be able to get 1 rupee for your boyfriend. समझा ना? समझा कि नहीं समझा? गुड क्वेश्चन. सम नंबर 20 कल हमने परसों हमने आप बोला था आपको कि जब 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 पॉपुलेशन का सवाल आता है तब तक वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. इन सर्टन सिटी फर्टिलिटी रेट वॉज 82 per 1000. फर्टिलिटी मतलब बर्थ रेट एंड डेथ रेट मतलब मोर्टेलिटी रेट इज 52 per 1000. तो फिर मेरे को बोलो अभी दिया क्या है?
Tell me what is given. Come on. Fertility rate is given to be 82 per thousand, matlab 82 over thousand. Mortality rate is death rate is given to be 52 over thousand. अभी ये babies born minus people die will be the rate of growth, and that rate of growth will be 30 over 1000. But we don't talk in terms of thousand, we talk in terms of percentage. Therefore it will mean 3 over 100, which is nothing but 3%. Anything over 100 is 3%. समझा? is percent. अभी तुम्हें R मिल गया. Now what do they want? In how many years the population will go from 10,000 to 13,500? So what is 13,500? What is 13,500? Bolo. What is 13,500? A. So 13,500 is equal to 10,000. You know that R is 3. So 3 over 100, and that raised to n. Bring this 10,000 down. 13,500. That divided by 10,000 should therefore be 1.03 raised to n. तो ये कितना हो गया? 1.3 ना? 1.35. And therefore log of 1.35 that divided by वो उधर का log of 1.03 is n. Now how to find log of 1.35? That you know. 1.35 root 15 times minus 1 divided by 0.00007027178. समझा ना? इस तरीके से करो. तुम्हें होमवर्क किया है तो फिर ये आसान होगा, और होमवर्क नहीं किया है तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि जो टास्क हमने डिसाइड किया है उसको एकम्प्लिश करना ही है. तो मेरे को बोलो ये n कितना आया? 10.15 years. So you could say 10 years complete, and 0.15 multiplied by 12 these many months. So 10 years complete. And how many months? So approximately 10 years and 2 months में ये population 10,000 से 13,500 बढ़ेगा. Was it difficult? Say no. No. Then I consider 21st sum. 50,000 was deposited in the bank. That gives 7%, but compounded half yearly. Listen, it is compounded half yearly. तो अगर compounded half yearly है तो period के साथ क्या होता है? Multiply. और rate of interest के साथ क्या होता है? Divide. And as such, अभी दिया क्या है? 50,000 is what? 50,000 is what? P. So P is equal to 50,000. Then rate of interest is given to be what? हाँ, पर rate of interest को divide करना पड़ेगा. So it will become 3.5% per half year. Then N is what? How much is N? बोलो ना. How much sum will amount to in 10 years ना? 8 years. 8 years है तो इसका मतलब होगा 8 into 2. That 8 into 2 is going to be 16 half years. Now you have to use the formula that you want. Therefore A is equal to, formula remaining the same, is 50,000 into 1 plus it's 3.5 over 100, that raised to 16. Therefore this is 50,000 into 1.035, that raised to 16. How will you do this? 1.035 into equal to counter now should become what? 17. तो करो into 50,000 करो. हाँ, rupees 86,699.3 अप्रोक्सीमेटली इतना होता है. जो चॉइस में दिया होगा उसे मार्क करो. Is that clear?
वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी, वेरी इजी. आगे वो पूछते हैं कि हाउ मच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड. तो इंटरेस्ट इज नथिंग बट ए माइनस पी ना. सो इट विल हैपन टू बी 86,699.3 लेस 50,000. जो भी आता है वो इंटरेस्ट है, वॉट एवर. Trust me, very easy to pass and get marks in maths. बिकॉज कंसेप्ट समझ गया तो इसमें कैलकुलेशन के अलावा बाकी कुछ बचता नहीं है. लेकिन आप एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते, एक दिन लेक्चर करते हैं, एक दिन लेक्चर नहीं करते हैं, तो फिर दिक्कत होती है. इरेग्युलरिटी इज द ओनली कॉज ऑफ फेल्यूर. समझा क्या? जितना पास होने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है उतना इंटेलिजेंस आपके पास है. सवाल यह है कि उतना डेडिकेशन है कि नहीं, उतना सीरियसनेस है कि नहीं. Anyway, now look at me for 20 seconds. How much sum will amount to 1 lakh in 10 years, 7% compounded monthly? So tell me, what is this 1 lakh? What is this rupees 1 lakh? Will amount to 1 lakh, no? And as such, this A is 1 lakh and what is to be found? P. So karo, therefore, P is to be found. A is given to be rupees 1 lakh. R is given to be 7% per annum, but it is monthly, na? So 7 divided by 12, what is that? 0.58333% per month. Now N is given to be what? 10 years. But tell me 10 years में months कितने होते हैं? Months है ना? तो 10 years में months कितने हो गए? 120. So this is going to be 1 lakh. That is equal to P, we don't know. 1 plus 0.58333, that divided by 100 and that raised to 120, which means P into 1.005833, that raised to 120. Tell me, how will you do this? 1.00583333, root, I mean into, equal to, counter should become 121. लेकिन शायद 121 आपके कैलकुलेटर पे नहीं आएगा. आया है? आया है तो वेरी गुड. कैलकुलेटर पे नहीं आया है तो रूट के मेथड से करो. यस और नो? रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू 120 एड 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. अगर कैलकुलेटर 121 तक काउंटर तक नहीं जाता है, तुम्हारे कैलकुलेटर की कैपेसिटी कम है. तुम्हारी कैपेसिटी कम है ऐसा नहीं मैंने बोला, कैलकुलेटर की कैपेसिटी. समझा ना? हाँ. सो 1 lakh दैट डिवाइडेड बाय, ये नंबर नीचे लाया तो P मिलेगा 2.00965. तो ये डिवाइड करो तो P कितना आया? 760. ये P हो गया जो 1 लाख रुपए बनेगा आफ्टर 10 years मीन्स 120 months. समझा क्या? थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट भी चेहरे पे छानी चाहिए. जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे अपना चेहरा भी मुस्कुराना शुरू कर जाएगा. पर अगर तो आपने किया ही नहीं तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी. गुड. Come on. Certain sum of money double 10%. How much is the period? Good sum. Good sum. मनी डबल मतलब क्या?
P is P, A is 2P, and R is 10%. But it's compounded monthly, na? So it is 10 divided by 12. How much is that? 0.83333, correct ना? That is percent per month. अभी n years का टाइम है, बट मंथली होने के वजह से वो 12 months होगा. Yes or no? n years है तो 12 months होता है. Period is multiplied, rate of interest is divided. Yes or no? कोई शक है तो बोलो. अभी कुछ रखो मत दिल के अंदर, जो भी दिल में है वो कह दो. 0.833333, that divided by 100. Now that is not raised to n, but it is 12n. PP cut. Therefore 2 is equal to 1.0083333333, that raised to 12n. And therefore log of 2 divided by is log of 1.00833333 is the value of not n but 12n. Karo. Go try it, go get it. Is that clear? तो मेरे को बोलो ये 12n की वैल्यू कितनी आई? What is 12n? 83.621. Now 83.621 is roughly 83, correct? Correct ना? Yes or no? 83.6. ठीक है, चलो 83.6 ये months हो गए. Listen, 12n is the number of months. Listen, 12n is number of not years, it is months. But we want number of years. So it is 83.6 divided by 12. Now these many will be the years. So roughly 6 point something, approximately 7 years. समझा क्या? क्या किया वो? Very nice. तो फिर ये 24th सम करो. Sum number 24. Certain sum of money tripled in 7 years. Rate of interest is to be found for monthly compounding. So P is P, A is 3P, N is 7 years. But tell me monthly के लिए क्या होगा? 84 months. And we need to find what is R percent per annum is nothing but R divided by 12% per month. Rate of interest is divided by ना, तो अभी R लेके नहीं चलेगा, R by 12 लेना पड़ेगा. तो फिर 3P is equal to P, that into 1 plus is R by 12 and that over 100 and that raised to 84. तो PP कट, अभी वो 84 इधर शिफ्ट होगा. 3 raised to 1 upon 84 is 1 plus, अभी ये 12 नीचे आएगा तो 1200 होगा.
So you won't be getting R upon 100 now, you'll be getting R upon 1200, 1200. तो अब ये 3 raised to 1 upon 84 कैसे करेंगे? 3 root 12 times that minus 1 that divided by 84 add 1 into equal to 12 times. Now what is that? 1.01316. That minus 1 is R over 1200. So 0.01316 into 1200 comes to be R. Now see what is that R? Huh? Is 15.79% per year. It's simple ना? It's really very simple, trust me. फेल होके दिखाओ. अगर तुम फेल होके दिखाएंगे ना तो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन फॉर्म की फी हम देंगे. समझा क्या? और पास हो गए तो क्या तुम हमें मैरियट में पार्टी देंगे. 37 ईयर्स हो गए हमें पढ़ाते पढ़ाते. आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो क्लास में लिया वो कुछ अलग था और जो पेपर पे आया वो कुछ अलग था. वो इम्पॉसिबल है. आप फेल हो गए इसका रीज़न एक ही है कि आपने किया नहीं. दैट्स ओनली रीज़न. इफ़ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ यू विल अंडरस्टैंड दिस. समझा ना? पहले एक्सेप्ट करो कि हमारी गलती क्या हो गई. एक बार एक्सेप्टेंस होगा तो फिर आगे उसको इम्प्रूवमेंट हो सकता है. ऐश्वर्या परचेस्ड मशीन फॉर 15,000. कब परचेस किया? आज. तो व्हाट इज 15,000? पी. वो कम होते होते कितनी हो गई? मतलब वो मशीन ऐश्वर्या नहीं. तो ए कितना हो गया? 7,300. Rate of depreciation. So for that matter we are now having the problem on depreciation. It is 8.5%. Then what is the life of the machine? But what is effective life? N. Effective life का मतलब क्या? N. Correct ना? So tell me what is the formula for depreciation? Tell me what is the formula for depreciation? That is A equal to, bolo, is equal to P into 1 minus R over 100 that raised to N. तो A कितना है? फ्यूचर वैल्यू कम होने के बाद वैल्यू कितनी रही? 7,300. P कितना था? 15,000. Then rate of depreciation, so 8.5 over 100 and that raised to N. तो ये होगा 7,300 that divided by 15,000. Now that is equal to, ये 915 होगा, 0.915 that raised to N. अब ये रेशो कितना आता है? 7,300 over 15,000 कितना आता है? So इसका log of 0.48 6666 5 digits लिखना है ना, तो 666 that divided by log of 0.915 is N. But remember ये दोनों भी log अभी माइनस में आएंगे. But that's okay because माइनस माइनस अगेन प्लस होता है. पीरियड कभी निगेटिव होगा क्या? नहीं. तो दोनों निगेटिव आएंगे तो अपना क्या चाहता है? जो आएगा वो आंसर होएगा. Root 15 times minus 1 divide by 0.00007027178. That's the procedure. That is the recipe, right? तो n कितना आया? n 8.1. 8.10 मतलब 8.1 ना? कैसा? These many years.
and therefore it will be 8 years and 0.1 into 20. ये किया है चॉइस में तो करने का क्या नहीं किया है इस तरीके से कैलकुलेशन तो मत करो 8 years and 1 month या फिर 8.1 years चॉइस में जो दिया होगा दैट वी हैव टू सी is that over अभी I have a couple of good sums over here ये 26 and 27 के तरफ देखो carefully these two sums you have to understand because the wording is specific stay focused this wording is particular क्या दिया है value of the machine reduced to 30% and next sum में दिया है reduce by 30% तो अभी समझो तुम्हारा एज कितना है प्रेजेंट एज 18 it rises by 3 years and it goes to become 21 years समझा ना yes or no it rises by 3 years and it goes to 21 years so that you are eligible for marriage समझा ना what is the difference between being able and between being eligible at this age of 18 you are able but not eligible and at the age of 80 you will be eligible but not able yes or no to for what for what for what हाँ तो ये जो बाय लिखा था वो मतलब क्या हो गया चेंज और ये टू मतलब एंड वैल्यू हो गई टारगेट वैल्यू हो गई ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स सो वेन एवर यू से बाय इट विल मीन change reduction or increment and when it's said to it means end value ये लिखो बाय मतलब चेंज एंड टू मतलब एंड वैल्यू yes or no हो गया क्या तो कब अभी यहाँ फर्स्ट समय उन्होंने टू बोला है 230% मतलब व्हाट हैपेंस P is P and A will become 30% of P मतलब 0.3P समझा ना and in the next sum they say reduce by 30% so in the next sum what happens is P is P P is P and reduction is 30% it reduced by 30% of P मतलब 0.3P तो A will be equal to what 70% of P मतलब 0.7P see try to understand यहाँ 2 था और यहाँ बाय है तो बाय मतलब दैट सॉरी यहाँ क्या था 2 और यहाँ क्या है बाय तो बाय मतलब रिडक्शन तो 30% का रिडक्शन हो गया तो बची हुई वैल्यू होगी 70% समझा ना
तो कम ऑन फिर अभी करो, देयर पर 0.3p इज इक्वल टू p 1 माइनस क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो r over 100 that raised to 8 pp cut, so 0 point rather 0.3 that raised to 1 upon 8 is 1 minus r over 100. तो इसमें से r निकालो एंड आउट हियर क्या होगा, 0.7 p is equal to p into bracket p into bracket 1 minus r over 100. 3 years and 7 months means 3.58333. Then p again will be cut. 0.7 raised to 1 upon 3.58333 is the value of 1 minus r over 100. Go start. दोनों भी क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस का काम पूरा करो. कैलकुलेशन इज जस्ट अ डोंकी वर्क. Go get it, go try it. Come on, ये 0.3 raised to 1 upon 8 कितना आता है? 0.8029. That is equal to 1 minus r over 100. So r over 100 is 1 minus 1.0.86029. तो r कितना आता है, 13 point something 9% per annum. Similarly, find out r here. R comes to be 9% per annum. ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया. ये बाय एंड टू इसमें का फर्क समझा क्या? पीपल गेट कंफ्यूज क्योंकि चॉइसेस में दोनों भी चॉइसेस हो गए. You have to understand what is correct, what is not correct. What is correct is important, but what is not correct is more important, because if you understand what is not correct, then eventually you understand what is correct. Yes or no? Then in that case, this 28 sum is also a typically good sum. तो उसके तरफ देखो. Look then at this sum number 28. Value of the car is 2,25,000. When is this value 2,25,000? Today. समझा? But while finding, what you need to find is what is the value 5 years ago. तो समझने के लिए फिर मेरे तरफ देखो. For tomorrow
today is the past. Yes or no? For tomorrow, today is the past. But for yesterday, today is the future. For yesterday, today is the future. So today's value is 2,25,000. But you have to find out yesterday's value. That means today's value will not be the present value, but it will become future value with reference to yesterday. And therefore, although today's value generally means present value, in this sum, that value is A. So that is 2,25,000. And 5 years ago, matlab n is 5. What is this value? That will not be A, but that will be P. And the rate of depreciation is 7.8%, which is the value of R. So go find it, come on. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ क्योंकि एग्जामिनेशन में अपने को स्पीड ऑप्टिमम लेवल पे रखना पड़ेगा. तो 2,25,000 should be equal to P 1 minus 7.8 over 100 that raised to 5. So 2,25,000 is equal to P into, is it 1.22? 0. What? 0.922 na? Yes or no? 922. And that raised to 5. So 0.922 into equal to and counter should become 6. 922 or 92? Correct. So just bring that number down here and you get the value of P. And then you get the value of P. कितना आया? 3,07,000. That comes to be the value of 5 years ago. Yes or no? Yes or no? All right, in that case, look at this sum. आप करेंगे कोशिश 29 और 30 की? 29 एंड 30 की कोशिश करेंगे क्या? Would you try? करो.
read it properly. We have written already as a note in the 30th sum. These are changing rates of depreciation, so we have to make the chain of terms. We have already written that as a note earlier. And 29th is a easy sum. So come on. क्या दिया है? Value of machine is 1/3 after 7 years. So what should I write? It means P is P. P is P. And A is 1/3 of P. Anyway, depreciation के बाद value reduce होने वाली है. Yes or no? And this happened after n is equal to 7 years. R निकालना है. So 1 by 3p is equal to p into 1 minus r over 100 that raised to 7. pp cut. So 0.33333 that raised to 1 upon 7 is 1 minus r over 100. तो निकालो r कितना आता है. r comes to be 14.5% per annum. ऐसा आता है क्या? चेक करो. Yes or no? How will you go about in the 30th sum? It's a chain of terms, and therefore we have already written the method that A will be equal to P, Abhi, 1 minus 7 over 100, that is for the period of 3 years, and 1 minus 9 over 100, that for the period of 2 years. And therefore this A is equal to P. Will it not be 0.93 raised to 3 and 0.91 that raised to 2? Correct? Huh? Huh. But P कितना है? 10,000 ना? So it will be 10,000 into 0.93 into 0.93 into 0.93. Instead of doing it part by part, you can do it one stretch.
0.91 इंटू 0.91, तो ये एक स्ट्रोक में आंसर आएगा। कितना आएगा? 6,616 6660 पॉइंट समथिंग आया क्या? यस और नो? Is the question clear? Is the procedure clear? And if it is clear, now I am heading on to the very important part of this chapter, that is annuity. Yes or no? So abhi, just a minute, look at me. Imagine you borrow a loan. Suppose you take a loan and you pay 3 installments of 100 rupees each. 100, 100, 100. तो आपने बैंक को कितना पैसा दिया? जब आप 300 रुपीज देते हो तो ना सिर्फ आप प्रिंसिपल रीपे करते हो बट इंटरेस्ट ऑल्सो पे करते हो उसके ऊपर का। ये सर, जो भी इंटरेस्ट होगा लोन के ऊपर का वो भी रीपे करते हैं। तो आपने टोटल रीपेमेंट किया है 300 रुपीज का, 100 इंटू 3, बट उसमें से अगर ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हें मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू, एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन। समझा ना? क्योंकि तुमने 300 रुपीज का पेमेंट कर दिया तो जो भी प्रिंसिपल था, सपोज दैट प्रिंसिपल कम्स टू बी 260, तो आपने 260 का भी रीपेमेंट किया है और उसके ऊपर के 40 रुपीज का भी रीपेमेंट किया है। समझा? तो ये जो है वो प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन हो गया। जो इंस्टॉलमेंट आपने भरा है, दैट इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट एन्यूटी, which could be per year, which could be per month, which could be per quarter, which could be per half year, and that is denoted by X. That is denoted by what? X. Whereas suppose तुमने रिकरिंग बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला और वहां तुमने डिपॉजिट रखा 100 का, तो बैंक को तुमने कितना पैसा दिया है? कितना पैसा दिया है बैंक को? 300। अभी बैंक को तुमने 300 पैसा रुपीज दिया, ये किसका पैसा है? तुम्हारा पैसा है। अभी बैंक उसमें से माइनस करके तुमको पैसा देगी या ऐड करके देगी? इंटरेस्ट ऐड होगा ना। तो इसी 300 में अगर तुमने इंटरेस्ट ऐड किया तो यू विल गेट अ फ्यूचर वैल्यू ए। समझा क्या तुमको? तो एक बात समझने की कोशिश करो कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब लोन होता है, और डिपॉजिट के केस में फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब तुम्हारा पैसा प्लस मिला हुआ इंटरेस्ट। समझा ना? तो डिपॉजिट के केस में क्या निकालेंगे? ए, और लोन के केस में क्या निकालेंगे? पी। क्योंकि मेनी टाइम्स कंफ्यूजन इज देयर, पी निकालना है या ए निकालना है। लोन का प्रॉब्लम है तो फाइंड पी, और डिपॉजिट का प्रॉब्लम है तो फाइंड ए इन जनरल। समझा? एंड देयरफॉर एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एन्यूटी है, दैट मीन्स इट इज एन इंस्टॉलमेंट। इट इज एन इंस्टॉलमेंट। दैट इंस्टॉलमेंट कैन बी पर मंथ, it could be per quarter, it could be per half year, it could be per year, and that is denoted by X. Then remember R percent per annum, ये rate of interest है, ये rate of interest है। तो I'll make a notation over here that I is equal to R divided by 100. I is equal to R divided by 100. Of course, N is the number of installments, is the number of installments, which means number of months,
quarters, half years, or years, whatever is the case. Clear? And now in general, whenever there is a loan problem, I'll find a present value P, which is equal to x over I, 1 minus 1 plus I raised to minus n. Whenever you have to find a present value, it is x over I, 1 minus 1 plus I, that raised to minus n. Abhi, whenever you have to find a future value, which is a, that will be x over I, 1 plus I raised to n, and that minus 1. वहाँ minus n था, अभी यहाँ power क्या हो गया? n. Alright. Now थोड़ा सा theory question के लिए लगेगा, इसलिए मेरी तरफ देखो. ये जो मल्टीप्लायर है I से लेकर ये सारा, ये मल्टीप्लायर किसका है? एन्युटी का. ये मल्टीप्लायर किसका है? x का. मतलब मल्टीप्लायर किसका है? एन्युटी का. और कौन से फॉर्मूला में? प्रेजेंट वैल्यू. एंड देयरफॉर ये जो फैक्टर है, इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. present value factor of annuity. It is the present value factor of annuity. So what is that? 1 minus 1 plus I raised to minus n, and that divided by I. ये होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. फैक्टर का मतलब मल्टीप्लायर. किसका मल्टीप्लायर है? एन्युटी एक्स का. बट कौन से फॉर्मूला में? प्रेजेंट वैल्यू. तो इट इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी. समझा ना? नाम समझा क्या? अभी मेरे को बोलो कि if that is true, then what would you say about this? What would you call it? That is the future value factor of annuity. And therefore, ये, therefore, this, yes or no? ये 1 plus I, that raised to n, that minus 1, that over I is called future value factor of annuity. Future value factor of annuity. ये सिर्फ नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एक अटेम्प्ट पे ये नाम से पूछा था कि व्हाट इज दिस. क्लियर? राइट. नाउ इफ दैट इज ट्रू, ये फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, दे आर रिलेटेड बाय द relation. They are related by the relation. What relation? This P and A are related by the relation 1 upon P minus 1 upon A is equal to I upon X. And the other relation connecting them is A, usual formula for compound interest. A equal to P 1 plus R over 100 that raised to N. ये दोनों भी P और A में का connection है. अतः when would I use the first formula? When annuity X is given. When annuity X is given. When the annuity X is given, but period n is not given, then I would use the first formula. And when would I use the second formula?
when the period n is given, when the period n is given, but the annuity x is not given, annuity x is not given, then I would use the second formula. समझा क्या? Say yes. Okay. Now we have some fantastic applications of annuity. It's very important part of this chapter. Applications of annuity. So give the title Applications of Annuity. And we'll see those applications one by one. As the first application, imagine you buy a machine. We are just going to write the summary of situation. You just buy a machine. You just buy a machine, say for 1 lakh. Okay? And rent it for a rent of, rent it for the rent of 25,000 per year for the period of 5 years. Then the rate of interest. Now what is rate of interest is also referred to as the cost of capital. The cost of capital is 8% per annum. Now is the proposal profitable? Now profitable is also called tenable, acceptable. ये सवाल है. पहला एप्लीकेशन, इसको कहते हैं लीजिंग प्रॉब्लम. इसे क्या कहते हैं? लीजिंग. क्योंकि आप लीज पे देते हो ना उस मशीन को, उस हाउस को, उस गाड़ी को आप लीज पे देते हो. समझा? So the situation is somewhere like this. Situation is that you have purchased a machine. You have purchased a machine. When do you purchase the machine? Today. And for buying that machine you are paying how much money? 1 lakh. तो यहाँ क्या होता है? That the cost of machine is rupees 1 lakh. That means that 1 lakh is payable today. And therefore यहाँ payable side को होगा present value, क्योंकि ये पे करना है आज. बरका. अभी तुम क्यों मशीन बाय करते हो? तो तुम्हें लीज पे देके रेंट मिलने वाला है. ये तुम्हारा बिजनेस है. आप मशीन लेंगे और किराए पे देंगे. आप गाड़ी लेंगे और ओला को देंगे. समझा ना? आप गाड़ी लेंगे और उबर को देंगे. तो उबर और ओला आपको क्या देगा? रेंट देगा. उस रेंट का भी बिजनेस हो गया ना. यस सर.
तो ये जो रेंट है दैट विल गो ऑन रिसीवेबल साइड, लेकिन ये जो रिसीवेबल है वो वन टाइम रेंट नहीं है, वो ईयर बाय ईयर है। तो ये जो रेंट है वो हो गया एन्युटी एक्स, ये हो गई एन्युटी एक्स विच इज गिवन टू बी ऑफ 25,000 पर ईयर। समझा? फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 5 years. And what is the rate of interest given? 8% per annum. What it means is 8I is equal to 8 divided by 100 which is 0.08. अभी मेरे को कंपैरिजन करनी है पेएबल वर्सेस रिसीवेबल। समझा ना? ये मेरे को कंपैरिजन करनी है। रिसीवेबल ज्यादा आया पेएबल से तो प्रॉफिट है, और पेएबल ज्यादा आया रिसीवेबल से तो लॉस है। लॉस है तो बिजनेस नहीं करना है। समझा ना? मतलब क्या है कि एक बाजू है प्रेजेंट वैल्यू और एक बाजू है एन्युटी। तो ये दोनों को कंपेयर करने के लिए हमेशा ये एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे? वी शैल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। वी शैल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी रिसीवेबल। ये सुनो, तो क्या होगा कि दिस इज इक्वल टू, यू आर गोइंग टू गेट 25,000 डिवाइडेड बाय 0.08 क्योंकि 8% है, एंड देन इंटू 1 माइनस इट्स 1.08, 1 प्लस आर अपॉन 100 ना, 1 प्लस आई, आणि दैट रेज टू -5. समझा क्या तुमको? इज दैट क्लियर? दैट विल गिव यू प्रेजेंट वैल्यू रिसीवेबल now, and this is present value payable. If present value payable is greater than present value receivable, then tell me what will you say? Then there is a loss. And whereas if present value receivable is greater than present value payable, then there is a profit. Yes, situation समझा क्या तुमको? So you always have to find the present value of annuity. You always need to find the present value of what? Annuity. सवाल यह है कि ये कैलकुलेशन कैसे करना है? Yes or no? तो क्या करेंगे बोलो? What will you do? You will say this is equal to, how would you proceed? How would you find 1.08 raised to -5? 1.08 मेरे को नेगेटिव पावर करना है, तो प्रेस अपॉन, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट इनटू, नाउ यू हैव टू प्रेस व्हाट अपॉन, बट अपॉन अपॉन करना पड़ेगा, सिर्फ अपॉन करने से नहीं होगा। यार समझ आया क्या तुमको? हाउ विल यू डू द कैलकुलेशन? नेगेटिव पावर निकालना है ना, तो go do it like this, 1.08. okay, now press, if you press it only once and keep on pressing, समझा ना, तो you will get what? करो 1.08 upon keep on pressing equal to, लेकिन तुम जब ये इक्वल टू प्रेस करेंगे तब काउंटर शुड बिकम n+2, मतलब काउंटर शुड बिकम 7। तुमको 5 पावर चाहिए ना, तो इनटू में क्या होता है? पावर शुड बी 6। अभी ये अपॉन करके क्या होगा? पावर शुड बिकम व्हाट? 7। समझा क्या तुमको? तो हाउ विल यू डू इट? टेल मी। 1.08 अपॉन, कीप ऑन प्रेसिंग इक्वल टू till now counter becomes 7. हाँ करेक्ट, तो ये वैल्यू मिल गई। तो अभी ये वैल्यू जो मिली है उसमें से -1 करेंगे तो ये पूरा फैक्टर मिलेगा। ये सुनो, तो ये वैल्यू जो आएगी उसमें से -1 करो,
और फिर 25,000 से मल्टीप्लाई करो एंड 0.08 से डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो और वो तुम्हें मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली। तो नेगेटिव पावर चाहिए तो अपॉन प्रेस करो, बट द काउंटर शुड बी +2। आया क्या? तुम्हारा कैलकुलेटर कैसा है, उसका वर्जन कैसा है, उसका मॉडल कैसा है, उसके ऊपर वो कैलकुलेशन डिपेंडेंट होता है। समझा क्या तुमको? लुक, क्या चाहिए था अपने को? 1.08, समझा ना? देन दैट रेस टू -5 ना, यस और नो? हाँ, तो कितना आना चाहिए? 0.68। कितना आया था क्या? तो ये हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर चेक किया, समझा ना? But our the whole world is giving the exam on the computer, but our ICI is not are allowing the scientific calculator. It's a big problem. It's a big deficiency. ये big weakness है। अगर scientific calculator होता तो calculation का समय बचता ना। Concept is more important than calculation. But अभी क्या करें, जो है वो इसके साथ जीना पड़ेगा। ये सुनो, समझा कि तुमको? तो रेस टू नेगेटिव पावर कैसे निकालना है? अपॉन, इक्वल टू, बट काउंटर शुड बिकम n+2। तो यहाँ कहीं तो भी प्रोसीजर लिखो, राइट अ प्रोसीजर दैट whenever we had to find the value of, प्रोसीजर लिखो बानो, whenever you had to find the value of x raised to -n, it should be x upon equal to and counter should become n+2। ये प्रोसीजर लिखो और फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 25,000 से मल्टीप्लाई करो एंड 0.08 से डिवाइड करो, तो तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू रिसीवेबल मिलेगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू पेएबल कितना था? प्रेजेंट वैल्यू पेएबल था 1 लाख और प्रेजेंट वैल्यू रिसीवेबल कितना हो गया? हाँ, 99,018। हाँ, तो रिसीवेबल इज लेस देन पेएबल, तो तुम क्या है? लॉस में है एंड देयरफॉर डोंट डू द बिजनेस, डोंट डू द बिजनेस। अभी जरा 1 मिनट मेरे तरफ देखो, तुमको 25,000 5 साल के लिए मिलने वाला है, तो 25,000 इंटू 5, वैसे तो तुमको 1,25,000 मिलने वाला है, तो जो 1 लाख से ज़्यादा है, पर वो वैसे होता नहीं। जो फ्यूचर में बड़ी अमाउंट मिलने वाली है उसकी आज की वैल्यू कम होती है, उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब क्या? फ्यूचर, वो एक सम देखा ना हमने, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमको 1 रुपए का मेलोडी चॉकलेट देना है, पर वो 5-6 years के बाद का 1 रुपए, मतलब आज के सिर्फ 66 पैसे हुए थे, तो आज की वैल्यू हमेशा कम होती है। और ये 1,25,000 पर जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कम है, और वो कम वैल्यू कितनी है? 99,000, विच इज लेस देन पेएबल। तो ये 1 लाख रुपए पे किया और 99,000 समथिंग रिसीव किया, ये लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया। ऐसा है। ये एप्लीकेशन समझा? गुड। सेकंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक या दो सिचुएशन 100% पेपर में आती है, आपके पेपर में भी आया था जो भी अटेम्प्ट आपने दिया है, समझा? सेकंड एप्लीकेशन इज दैट मुझे एक मशीन बाय करना है, लेकिन ये बाय करने के लिए मेरे पास एक डीलर है, वो डीलर ए है, और देयर इज अनदर डीलर बी। अभी ये ए बोलता है कि यू हैव टू पे लमसम 1 lakh rupees. You have to pay 1 lakh rupees today. When? Today.
दूसरा डीलर क्या बोलता है कि आपको आज एक पैसा भी नहीं देना है. What you are supposed to do, you have to pay rupees 25,000 per year for the period of n is equal to 5 years. Rate of interest is considered to be say 9% per annum. That means I is equal to 9 over 100, which is 0.09. आता which dealer is better? क्या सवाल है? Which dealer is better? तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेना अच्छा है. आता ये 1 लाख रुपीज क्या हो गया? 1 लाख इज पेएबल. व्हेन पेएबल? टुडे. तो ये प्रेजेंट वैल्यू पेएबल हो गई. यस और नो? दैट मीन्स ये डाउन पेमेंट हो गया. आज 1 लाख रुपए पे करो, वो मशीन घर को लेके जाओ, बाकी आगे कोई रिलेशन, कोई ट्रांजैक्शन बचेगा नहीं. और दूसरा क्या बोलता है? अभी पैसा मत दो. 25,000 के 5 इंस्टॉलमेंट्स आपको भरना है पर ईयर. जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 9% है, समझो. अभी हु इज बेटर? विच इज बेटर? अभी ये दोनों डीलर को यू आर गोइंग टू पे ओनली ना? यस और नो? सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू पेएबल फॉर ए. अभी यहां क्या करेंगे? यू विल फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ये भी पेएबल ही है फॉर बी. तो टेल मी हाउ विल इट गो? इट विल बी 25,000 divided by 0.09 into 1 minus 1.09 raised to minus 5. So tell me how will you do this calculation? Calculation का sequence लिखो. So it will be 1.09 upon equal to counter should become 7. Then you will say minus 1 multiply by 25,000 divided by 0.09. You will get present value payable for B. कितना आया? करो कैलकुलेशन. Hmm? 80? 97,241 समथिंग. अभी मेरे को बोलो पेएबल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? And therefore present value payable for B is less than present value payable for A, and therefore B is better. And B is better मतलब annuity is better. Down payment is not good, annuity is better. ऐसा इसका कंफ्यूजन होता है. तो दोनों बाजू भी पेएबल है, लेकिन ए का पेएबल ज़्यादा है, बी का पेएबल कम है, तो बी इज बेटर. द सेकेंड एप्लीकेशन समझा ना आपको? Okay. Now, as an application number 3. Application number 3. Give the title application number 3. And that application is of pension. Is of what? Pension. अब ये पेंशन क्या सिचुएशन होती है? जब अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्स, सुनो, when especially the government employee retires, suppose there is a soldier who has served the country through army, Indian Army or Indian Air Force, say for 25 years, and then he retires. Due to age factor he retires. But when he retires, his income will stop. Yes or no? His salary will stop. तो गवर्नमेंट क्या कहेगा?
आपने देश के लिए 25 इयर्स काम किया है, तो आप जब रिटायर होगे तो आपकी फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी हमारी, विच इज ट्रू, विच इज वैलिड, विच इज गुड। तो उन्हें क्या बोला जाएगा, यू विल गेट अ पेंशन पर ईयर और पर मंथ। जनरली पेंशन होता है पर मंथ, समझा ना, पर हाफ ईयर भी हो सकता है, बट यू विल गेट इट पर मंथ, एंड देयरफॉर बिकॉज इट इज पर मंथ, दैट पेंशन इज गोइंग टू बी एन्यूटी। जो पर मंथ, पर क्वार्टर, पर ईयर होता है वो एन्यूटी होता है, एंड देयरफॉर पेंशन इज नथिंग बट एन्यूटी। Imagine it is say 10,000 per year. Suppose it is 10,000 per year. Pension is per thousand, but 10,000 per year. Now, till when will he get the pension? Till he is alive. समझा ना? जिस दिन वो मरेगा पेंशन बंद होगा। सवाल ये होता है कि वो कब मरेगा ये किसी को पता नहीं है। जब पेंशन स्टार्ट होती है, रिटायर होता है, तो एक सोसाइटी का एवरेज लाइफ कितना होता है, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। एवरेज लाइफ, कोई उसके बाद मरेगा, कोई उसके पहले मरेगा, लेकिन एवरेज लाइफ इतना होता है रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट का सपोज एज है 58 ईयर्स का, और सपोज लाइफ एवरेज लाइफ ऑफ द सोसाइटी इज 68 ईयर्स, तो इसका मतलब ये 10 ईयर्स और जिएगा एवरेज में। लेकिन वो इंडिविजुअल जो है वो पहले भी मर सकता है, बाद में भी मर सकता है, समझा ना? तो लेकिन वी विल कंसीडर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी गिविंग यू एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ही विल बी सर्वाइविंग, ही विल बी अलाइव। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ will be n, and suppose that n is equal to what, 10,000 per month समझो, जनरली पेंशन पर मंथ होता है, तो इमेजिन इट इज 7 ईयर्स। इमेजिन इट इज 7 ईयर्स, 7 साल का एवरेज लाइफ है रिटायर होने के बाद। तो बट ये मंथली है ना, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा मंथ्स में, तो 84 मंथ्स हो गया, समझा? The prevailing cost of capital or rate of interest is imagine 8% per annum, but 8% पर ईयर है, हमें उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज पर मंथ। सारा कैलकुलेशन पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8/12 कितना आता है? 0.66666% per month, and therefore I will be equal to 0.66666 over 100, and that comes to be equal to 0.00666666। अभी एग्जाम में क्या बदल सकता है? सिर्फ नंबर्स बदल सकते हैं, फिगर्स बदल सकती है, टाइप बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो भी हम क्लास में लेंगे उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, समझा? अभी उसको चॉइस दिया जाता है, एक तो ये पेंशन ले ले तू, नहीं तो पेंशन इक्विवेलेंट वैल्यू यू टेक इट टुडे एंड देन गुड बाय, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, समझा ना? तो अगर वो गुड बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा, ये ऐसा पर ईयर पर मंथ नहीं लेगा, वो बोलेगा इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू तुम मेरे को आज दे दो, आई विल डू द बिजनेस, आई विल इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस, आई विल डू द बिजनेस, समझा? तो ये जो वैल्यू होती है दैट विल बी द सिंगल सम in place of pension, in place of pension। ये सिंगल अमाउंट हो गई, आज ले लो रिटायर होते समय। लेकिन वो अमाउंट कितनी होगी ये इसको कैलकुलेट करना है, वो तुम्हारे पास आता है बिकॉज यू आर द फाइनेंस एक्सपर्ट। तो मेरे को बोलो ये अमाउंट को क्या कहेंगे, ये अमाउंट क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज देनी है ना उसको, गवर्नमेंट आज देगा ना, एंड देयरफॉर ये पेंशन इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, ये हमारा सवाल है। ये हो गया एप्लीकेशन, समझा क्या तुमको? तो क्या उसको पेंशन की टर्म्स बताई गई है,
तो उसे ये डिसीजन लेना है कि गवर्नमेंट मेरे को आज कितना पैसा देगा, तो वो तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा ये इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होती है, फिर तुम क्या बोलेंगे, मेरे को भी नहीं पता, ऐसा बोल के चलेगा क्या? नहीं. एंड देयरफॉर अगेन दिस प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू, बोलो, 10,000 divide by 0.00666666 and 1 minus 1.00666666 raised to minus 84. This is pension equivalent present value. हाँ उद्याला मग मी येईल ना तिकडे, प्रेस्टिजला जातो ना, मी प्रेस्टिजला जातो. Yes or no? तो कैसे करेंगे कैलकुलेशंस बना दो इसकी. 1.00666666 upon equal to now counter should become 86, फिर minus 1 then multiply it by 10,000 and divide it by 0.0066666. तो तुम्हें मिलेगी पेंशन इक्विवेलेंट आज की वैल्यू. तो 6,41,500,764. देखो मैंने तुमको क्या बोला है, 5 डिजिट लेना है, तो 00 के बाद भी 5 डिजिट लेना है, 6666. अगर आप 3 ही लेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा. कम से कम 5 लो, 6 लिया तो चलेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा ना चॉइस से. तो अप्रोक्सीमेटली इतना पैसा तुम्हें आज मिलेगा इन लीव ऑफ पेंशन. उसको क्या कहते हैं, इन लीव ऑफ पेंशन, मतलब इंस्टेड ऑफ पेंशन. Is that application clear? These applications are the fabulous applications. These are the fantastic applications, and we need to understand them seriously. आया ना? Say yes. ये पहले ही किया होता तो फेल क्यों होते ना? पहले नहीं किया इसलिए फेल हो गए, है ना? क्या काय म्हणते? ठीक है, application number 4 onwards we'll see tomorrow. But at present, let's go little slow, no, but let's go very firm as long as these chapters are going on. But you can see, you can solve these questions. 1 minute, look at me. Yes, सारे questions 31, 32, 33, 30, 34 छोड़ दो, लेकिन 33, 35, 36, 37 you can do them. फिर ये बॉन्ड वैल्यू का कैलकुलेशन वी विल सी टुमारो. समझा? लेट मी स्टॉप.